start a very means what can I say, a very general term like wastewater, and hope all of you are well aware about this term, right? So mainly wastewater is coming from the domestic or different communities, houses, industries also, or sometimes we can say also it is contributed from infiltration or inflow. Here you can see a picture here, a schematic how wastewater can be managed or how it is generated, right? So a community having number of houses, a house may have more than two or three people, up to five, six people also. So we see how we are utilizing water, fresh water for our daily purpose, for drinking, for kitchen, for bathing, washing of the clothes, even washing of the floors or the cars or other utensils in our house in daily life, right? So after use, it ultimately goes to a channel, to a sewer, or to a pipe, or that used water cannot be used for our daily purpose. So what can I say means what we infer from this, it is a wastewater, right? But along these things, it also picks up a variety of elements or compounds that are harmful, okay? Like the means oil and grease. Many times fats and oils are used in the kitchen and utensil washing. It goes into the drain pipe from the sink and ultimately meet in the main drain pipe of a building or a house in plumbing system. Then also, we also as a human being excrete in morning or evening or night urine also. Then this also ultimately meet into that pipe, drain pipe. So combination of that toilet waste, washroom, urine, excreta, along with the water that is used for the kitchen, bathing, washing, all these things combination is a domestic wastewater. Sometimes this domestic wastewater also called municipal wastewater, since every town, city, village having municipality. Small towns also having municipality, larger cities having municipal boards, okay, like MCD, Municipal Council of Delhi, and like Aligarh, maybe Aligarh having municipal board, something like that, or Nagar Nigam like that. Big cities now having small cities, towns having municipality. Okay, simple municipality. That's why we call it a municipal wastewater, because municipality persons, engineers are responsible for managing that wastewater. Then apart from this, another kind of wastewater is industrial wastewater. Industrial wastewater is depend on type of industry. Okay, how the fresh water is utilized in that industry. There are number of industries exist nowadays, like slaughterhouse, or we can say meat processing industry, steel industry, or fertilizer industry, food processing industry. A number of industries, if you see around us in different cities, in each town, city, at least one, two industries, the big cities are having some industries at least. Okay, that industry also generate wastewater, and that is means specific to that industry. How much wastewater is generated depends on that industry, right? How kind of the product they are producing, manufacturing, or raw material they are using, that industries are using. So that wastewater is specifically from industries generated by washing of the raw material, or during manufacturing process or production process, or then after its use also packing, bottling, or washing of the machines, equipments in the industry. That ultimately also collected somewhere in a tank or somewhere, okay, in a basin, and that also called the wastewater. But that wastewater is called industrial wastewater, or technically most of the time engineers used to call it as a industrial effluent, because
it is coming out from the industry after different application of the fresh water. Then infiltration, inflow. What is infiltration? Some of you may be from engineering background and from chemistry also. Here, people they well understand this. Or these are very general terms. I think all of you are well aware of these terms. Infiltration, inflow. Infiltration is something penetrating. Okay, seepage like that. So from the soil, you can see here infiltration. Like this surface water, like rainwater fall. Precipitation occurs nowadays. Huge rainfall occurring in various towns in northern India. Okay, last week and couple of days ago, lot of rainfall occur in most of the towns of North India. So some part of the water percolates into the ground. Okay, where there is no paved ground. Okay, there is no paved ground, no pavement there. So from the grass or from the soil, it percolates into the aquifer, deep aquifer, and some travel somewhere, meet in the pipe or at the lower ground level. It meets somewhere in water body, okay, or in aquifer. So that is the infiltration. If that pipeline, sewer lines or networks, they are not properly joined, or leakages, maybe because of long old pipes, corrosion, okay, or some other due to various reasons, okay, broken, damaged by man, by human activities sometimes. So these infiltrated water also penetrated or entered into that pipeline. Okay, that also termed as wastewater. Then inflow. Inflow is from the top of the surface through the manholes if it is entering into a transportation system or into a wastewater treatment facility or in a sewer line. So these are the major components that are contributing to the wastewater. Okay, so these are separately treated. We cannot mix industrial wastewater, domestic wastewater together, because industrial wastewater, as I said, depends on the type of product they are manufacturing or kind of the raw material they are using. Some industry may be dyeing industry, like textile industries, clothes जहाँ पर बनते हैं, they are coloring the clothes. Okay, so dye are the very hazardous, and they are having colors, different colors. Okay, so they are, that kind of wastewater must be treated separately. For domestic wastewater, around the globe, in any country, any city, anywhere you will go, you will find mostly the same kind of the characteristics of the wastewater, or a municipal wastewater, whatever we called, or sometimes we also called it as a sewage in some books or some literature. This wastewater is also called sewage. So sewage, municipal wastewater, domestic wastewater is same wastewater, and that can be used interchangeably, and these are only English terms and carry same meaning. But for the industrial wastewater, it depends on the industry and coming out from the industry. Infiltration, inflow can happen, can occur in even in the industrial wastewater, also even in the domestic wastewater, right? Now let's take a look on the current status of the wastewater management. These are the some latest figures which I have taken from the UNDP website. You can also check it. I have also, in the last of the slide, I have also shared the link, and you can note down from here, or I will, after the presentation, I will share this PPT also with you. So approximately 42% of household wastewater is not treated. This report is from 2023. Not treated properly around the globe, not in India, it is around the globe. Damaging ecosystems wherever they are disposing without any treatment or partially treatment. Then also somewhere or somehow adversely affecting human health. Apart from human health also, these kind of untreated wastewater, if discharged into an ecosystem on the land or on the surface water body, they are somehow also affecting animal life also. Then next, only 27% of the industrial wastewater is safely treated. It is based on the data collected from 22 countries, and this is the latest figure. We have collected this in 2024. I have collected this from the UNDP website. So this data is of 24. This recent means very recent, based on the
22 countries. You can see if you click here, you will see which 22 countries are these. Okay, then and you can see here the untreated wastewater or treated wastewater. How can we utilize? Don't say it as a waste. It is kind of a resource, and we have to extract that potential. So untapped potential of the wastewater reuse, okay, is around 320 billion cubic meter per year. You can see how much quantity of wastewater is, we can tap this, the potential, we can extract this as a resource, we can use as a resource. Okay, with the potential of supply जो treated water है, okay, 10 times of that current global desalination capacity. This is again almost a very latest data. So desalination capacity जो है उसका 10 times से कम, okay, इतना इसमें potential है, waste water reuse potential, we can say that. So we can say how much figure we are seeing here, wastewater, untreated wastewater, this 320 billion cubic meter per year, and approximately 10 times of the desalination capacity globally. So we can use that as resource this. So wastewater can also generate biogas, heat, and electricity. Okay, if we treat it as a, means consider it as a resource and treat it a proper way, in a proper way, so we can get the biogas. Then ultimately biogas can be converted as a fuel to produce heat or electricity. Then you can see here it can also produce 5 times more energy than it is required for its treatment. We have data also. Personally, I have done a lot of study on the wastewater treatment, and we have, if we get will have some time, we can share that figure also to you, some Excel sheet. Okay, so we have seen also, we have personally, means I can say personally, I have analyzed that thing, that significant amount of energy can be generated from the treatment of wastewater. So enough to provide electricity for around a half, means billion people per year. This is again the UNDP data and latest figure. Okay, so it is not my words. These are the words based on the different countries, scientists, highly, means eminent professors, researchers. Those have done the research, and that UNEP or UNDP compiled the data. So you can see again several water-related disease, including cholera, schistosomiasis, remain widespread across many developing countries. Still, okay, still, if you see in our country also, government may or may not, because I am not aware about this data actually of my country here, but from my students or from my friends, I have heard these for last means 2 3 weeks, because of the lot of rain, some parts of like in area of Hardoi, Lucknow or Pilibhit, this what we call that Trai region. So a lot of people are feeling this kind of disease nowadays. A lot of death has happened here. Okay, and because of that reason. Okay, so because no proper management of water or wastewater like that. So across many developing countries, where only very small fraction, in some cases less than 5% of domestic or urban wastewater is treated prior to its release into the environment, right? अभी भी आप देखिए, if you see around us in the rural area, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर there is still lack of the proper treatment facility for domestic wastewater or sewage, right? क्या होता है वहां पर, सेप्टिक टैंक बने हुए हैं, किसी के यहाँ सेप्टिक टैंक भी नहीं है अभी. That ultimately is the nearby pond of the city. But ज्यादातर लोगों के यहाँ पर टॉयलेट बन चुके हैं, but still they are not working properly, right? Now again, what are the SDGs? What is the SDG? Means Sustainable Development Goals. Okay, Sustainable Development Goals, also called global goals, and these has been adopted by United Nations Development Program or UN in 2015 as a universal call, and their main objective were to end poverty, protect this planet, and ensure all people the peace and prosperity by 2030. Right? These were the major objectives of this universal call, or based on that
17 sustainable development goals were made. Okay, so that these things can be eliminated up to 2030. And what are these 17 sustainable development goals? Like this: no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, then clean water and sanitation. This is the sixth sustainable development goal, because you have seen these figures, these data, right? 42%, 27%, and then here again 5% of the some parts of the world, still means treating only or poorly treating and then releasing it into that environment. So based on that, 17, and out of 17, sixth number means SDG, Sustainable Development Goal for clean water and sanitation. Okay, this is our main task, right? Then what are the major indicators in SDG, Sustainable Development Goal? These are the different goals: to provide safe drinking water, sanitation and hygiene. Then wastewater. Wastewater means how to treat this wastewater. Either we have to, or we have to treat it at central facility. Sorry, anyone? Someone saying something? Okay. So water quality, then how to check the water quality? Everyone must be aware kind of water, how it has been given to us or to me or to her or she, anyone. Okay, so we must aware about the quality of water. Based on that, to know, to familiarize, to sensitize these things. Water, World Water Day has been, originated. And then water use efficiency, World Toilet Day also celebrated now. Then water stress, water management. These goals, these are the few indicators that should be, everyone has to learn this. Okay, we have to familiarize with these terms, with these terms. So what is that 6.3.1 wastewater? What is the purpose of this? Proportion of wastewater flow from each household. How much wastewater is coming out from the house, from a community, or services at offices, office building, industries, economic activities. Okay, that is safely treated before it is discharged into the environment. Environment especially means either we have to dispose it on the land or on the water body, right? If somewhere is nearby some water body, either it is a stagnant water body like lake or pond, or it is a flowing water body like river or a small channel or big rivers like that, or some drain or some natural channels, then they ultimately meet into that lakes or rivers or surface water body. Or then also treatment, also how much level or how we are treating that wastewater, either at the source, at itself at the household or a community or in the industry, or through the centralized treatment facility. So these are some major important, globalized issues, and this is our sixth goal, SDG, most important goal. Government, every government, our government also emphasizing it. Okay, for past couple of years. These are the links I have, told you. You can check these links thoroughly, and you will get more knowledge on this. How to calculate and which countries are involved, how many countries are involved. Hello. Okay. Now, again, once we are dealing with the wastewater management or treatment, sometimes, we have observed there are a lot of terminology terms used in the treatment, wastewater management, right? During treatment or management, which are often confusing, right? So many students we have asked. It is our also experience, and when I was also the student, it was also my experience. I am sharing with you. Then my teacher asked me what is contaminant, impurities, pollutant. So many of us, confused that time. And still, as a teacher, when I ask the students, usually they are also confused. And these are, very simple terms, but still confusing. So we have to clear these terms, terminologies, once we are discussing about the wastewater management and its treatment. So there are certain terms like contaminants, impurities, or pollutants also. So these terms are three different terms, but three. Okay, they can be used interchangeably. Then constituent and characteristics. What are the constituent and characteristics?
Constituent is any individual element or compound like ammonia or Hg, okay, calcium carbonate, like that. And characteristics, when a group of compounds or elements, okay, combines together in a mixture, in a solution or in a water or in any aqueous solution, right? So these are often, feel confusing terms. Sometimes somebody asks you what is contaminant, anyone can ask impurity or pollutant. So we can say all these are same thing, okay? Anything that, any compound that is in excess of permissible limit and causes the damage to the environment, public, human being, animal life, become a contaminant or impurity or pollutant. Constituent, a single entity or single element or compound, whatever it can be. Mercury, Hg, okay, sodium, calcium, potassium. This is single entity, okay. Then characteristics, it is referred to group of compounds or element when many occur like HgCa और आपका सोडियम पोटेशियम बहुत सारी चीजें मिला करके कर दिया, then it become a characteristic, okay. Then another important term is composition, okay. तो कई बार क्या होता है कंपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट बड़े कंफ्यूजिंग से लगते हैं. तो कंपोजिशन मीन्स एनीथिंग यू आर मेकिंग, ओके, ए सॉल्यूशन, or here you can see make of wastewater that include physical, chemical or biological constituents, right? Physical, chemical or biological constituents, right? So it become composition of wastewater. Another is sludge, then biosolids. Sometimes you have also heard influent or effluent, then parameter, point source and non-point source also. Here it is one important term is sludge, and there I forget to write another is biomass, biosolids. These are three similar kind of words, but they have different meaning here, okay. Sludge nowadays, earlier the sludge term is the oldest one which was used when means any during wastewater treatment, any residual form, the product formation, right. क्या होता है वेस्ट वाटर में जो इम्प्यूरिटीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके अंदर है, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो क्या है, दे चेंजेस, डिग्रेड और मेक एनी अदर कंपाउंड, सो दे मेक समथिंग, है नहीं, कुछ ऐसा एज इट इज रहेंगे, तो दे कॉल्ड एज ए रेसिड्यू. तो उसको रेसिड्यूअल्स ना कह करके रेसिड्यू, देन टेक्निकली और इन टर्म्स ऑफ द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वी कॉल इट एज ए sludge. But now, according to latest norms of World Water Federation, okay, WEF, what they have suggested, we have to segregate the term sludge into biosolids or biomass. Biomass means technically in environmental engineering term refers to the microorganism, mainly microorganism, like bacteria. Then biosolids, that fraction of the solids that has been treated to that level which can be reused for agriculture purpose, for any other purpose, right? That sludge, okay, listen it carefully, that sludge which has been used or solid material that has been treated up to the level which can be used further, these are called biosolids. Then again a classification of biosolid, class A, class B, class C. I am not going to discuss with that. This with the coliform or fecal coliform. Again, there are different definitions, but we have to stick only here. Okay. So influent and effluent. These are again very important terms. Influent means something entering into the system. Okay. Inflow of wastewater entering to the wastewater treatment facility. राइट कोई कंटेनर आप ऐसे समझ लिए रूम है, आप बैठे हुए हैं, क्यूबिकल रूम है, रेक्टेंगुलर रूम है, वन एंड इज आपने बना दिया, एक तरफ से पानी अंदर आ रहा है. सो एंटरिंग समथिंग मास of liquid is entering into a reactor, into a system, that is called influent. Effluent, after the treatment, the same wastewater after treatment flows out, leaving the system, leaving the reactor, leaving the basin or room, that become the effluent. So inlet
outlet, influent, effluent, these are the same thing. But in the, those who are familiar with the civil engineering or environmental engineering, they might understand this good, or they may know it. Some of you may not know what is influent or effluent. Another term, affluent, is rich. That is not means here. It is affluent. Okay. So parameter. Another term is parameter. Parameter, anything, any factor which is measurable, like temperature, turbidity, or what can I say, pH. Okay, these are the parameters. अब पैरामीटर्स कई सारे हो सकते हैं, किसी भी तरीके होते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, देन माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, right? So point source and non-point source, these are again important terms. Point source means, as the term indicating itself, point means single point. Okay, pollution load discharging or disposing of onto ground from a single source, okay, at a specific location, like outlet of the pipe from the house entering it into the roadside channel. Okay, रोड की तरह कई बार देखा होगा, छोटे छोटे गांवों में, शहरों में अभी भी छोटी छोटी नालियां होती है गली के आसपास में, अब तो सीवर लाइन पड़ने लगी, राइट? और मतलब सीवर में भी जा रहा है वो आउटलेट पाइप वो डायरेक्टली, बट वो हमें दिख नहीं रहा, वो ग्राउंड में इम्बेड कर दिया गया। ओके, लेकिन पहले अगर आपको देखना, या कहीं पर देखिए, कहीं नदी नाले के किनारे जा रहे हैं तो कोई एक आउटलेट पाइप गिर रहा है, that is the point source. If pollution is discharging from that, or domestic wastewater, municipal wastewater, or even industrial wastewater, if it is allowed to discharge from the single pipe at a particular location, then it is a point source. Then non-point source, sometimes called diffuse sources also. Another term for non-point source is diffuse source, or the pollution load that is discharged from a multiple points, from a multiple location over an area. Okay, over an area. तो क्या हो जाएगा वो डिफ्यूज सोर्सेज, जैसे एग्रीकल्चर रन ऑफ, यानी खेतों में बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड में या शहर से निकल के डिफरेंट एरिया से एक पूरा जाके जा रहा है, पॉल्यूशन भी मिल गया, फर्टिलाइजर, सब क्या क्या उसने पिकअप कर लिया ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन. So these are certain technical terms which has been, most widely used in the wastewater or wastewater treatment or its management, and often become, point of confusion to many, even engineers. Though we are in touch with the, public health engineers or UP Jal Nigam engineers, sometimes they are also confused with these terms also, right? Now, another important aspect during wastewater treatment is material balance, or sometimes mass balance. I think all of you are aware of this thing also, this simple phenomena. You see, if we take some system, okay, this is a control boundary or volume, okay, control volume, and then something we are entering, this input, or we can say influent, input or influent, this is output or effluent, then this is a, we can say it is a kind of basin or any vessel, okay, container. So what happened, anything if allowed to enter in this basin or in bottle or vessel, what will happen here? There are four fates. If any substance is here coming with that, suppose it is a wastewater or domestic wastewater, it has lot of impurities, lot of, harmful material also, substance it picks up. So what will happen to that if it is a treatment plant, say for example, or हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, suppose my body or any one body, what we are taking, okay, डॉक्टर कहता है अभी बीमार हो गया, ये इनटेक लीजिए, तो डोज का रेस्पॉन्स कैसा होगा, डोज डिसाइड होती है. तो इन सेम वे, in case of our wastewater management, we see, we analyze how much of the pollution is entering and how much of the pollution is leaving the system or discharging into the atmosphere, and the remaining, suppose 100% entering here, 80% going out, or 10% going out, so 90% where it has gone. So for that 90%, either it is accumulated inside this boundary, inside this control volume, or in a vessel container, or maybe to another thing, it may decay, उसका वो decay हो गया, कुछ और फॉर्म में बन गया. Then generation,
या तो बढ़ गया वो या घट गया कोई भी सब्सटेंस। तो ये चीज, तीन चीजें हो सकती है। और चौथी क्या है, वो एज इट इज आउट निकल गया वो। तो सब्सटेंस दैट एंटरिंग इनटू दैट बाउंड्री, दिस कंट्रोल वॉल्यूम और दिस सिस्टम बाउंड्री, दिस एनी सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस हैव फोर फेट, चार उसके फेट होंगे। क्या हो सकते हैं, पहला एक्युमुलेशन होगा, एज इट इज एक्युमुलेट हो जाए इसी के अंदर, है नहीं, रुक गया उसके अंदर। दूसरा क्या होगा, उसकी कमी हो गई, घट गया वो, ओके, किसी और फॉर्म में चेंज हुआ। या वो सब्सटेंस और बढ़ गया, बजाय घटने के उसकी क्वांटिटी और बढ़ गई। सपोज यहाँ 100 kg दिया था आपने, यहाँ देखा तो वो जो है और यहाँ बढ़ गया, तो उसका बढ़ना हो गया। या क्या हो सकता है, कुछ कंसंट्रेशन बाहर एज इट इज निकल जाए और कुछ एक्युमुलेशन हो जाए, कुछ डिके हो जाए। तो डिके होगा तो कुछ और गैसेस की फॉर्म में इमिशन हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। So based on that simple concept, we formulate a model, a equation, basic equation, that is accumulation rate. This how much is accumulated with respect to time is equal to input rate with respect to time, volume or mass entering into this system boundary per unit time, maybe per day, per hour, per minute, per year, whatever it is. So it is the mass per unit time entering to the control boundary to the vessel minus this output कितना बाहर निकल गया as it is. So the mass of that substance leaving that system at the with respect to time प्लस रिएक्शन में क्या होगा, ये रिएक्शन रेट हो गया, चेंज डिके जनरेशन, ओके। या तो वो डिके होगा, जैसे आपका सोडियम था, या तो वो खत्म हो गया सोडियम, या सोडियम की मात्रा बढ़ गई, तो ये रिएक्शन रेट कहलाया जाएगा, राइट। तो हम जो है एक्युमुलेशन रेट निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम में कोई पॉल्यूटेंट एंटर हो रहा है, हाउ वी कैन कैलकुलेट its fate, what is happening inside the body, inside a system, inside any ecosystem like lake, river, water body, whatever it is, means happening, what is happening inside that after it entered into a particular location, particular boundary, or a volume or area. Now solution of that model, how we solve this equation. This is, don't misunderstand this. It is a very simple concept and mainly used for the wastewater treatment, or when we are dealing the management of water, wastewater, or cleaning of river or lakes, whatever it is, okay. So there are two possible ways. This equation is, little, tedious. Here you cannot calculate easily accumulation rate, here reaction rate also, three unknown things here, two unknown things here, you can see here. So how we will solve this equation? Number one, assume that system either it is equilibrium, in equilibrium, or steady state, or we can say the substance entering to the system is conserved, means not decaying, conserved or non-conserved, conservative substance or non-conservative substance that cannot be decay, okay. So either we have to make our system equilibrium or under steady state condition. How we make it? There is no accumulation of mass with time. This, there should not be accumulation of mass, the mass of substance. कोई भी pollutant substance enter हो रहा है वो यहाँ पर accumulate नहीं होना चाहिए with respect to time. That means zero, okay. Or another thing, you have to make the constant input. जो भी एक मास आ रहा सब्सटेंस का, वो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक कांस्टेंट रेट पर एंटर होना चाहिए, दस रेट ऑफ एक्युमुलेशन बिकम जीरो, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो एक्युमुलेशन रेट बिकम जीरो नाउ। देन सेकंड क्या है ऑप्शन, जो इसमें एज्यूमशन है, जो बैलेंस को इक्वेशन बैलेंस करेंगे, हम सोल्व करेंगे, रेट ऑफ जनरेशन और डिके मस्ट बी जीरो। मींस कब जीरो होगा, या तो वो सब्सटेंस का जब वो कंजर्वेटिव मटेरियल एज्यूम कर लें उसे, और कंजर्वेटिव मटेरियल्स बहुत सारे हैं, सब्सटेंसेस ऐसे दैट कैन नॉट बी डिग्रेडेड लाइक टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, टीडीएस इन वाटर, कहते हैं ना कि इतने टीडीएस होने चाहिए। भाई आपने देखा होगा सम एनिमल डाई एंड इट इज lying on the roadside, after 3-4 days what happened to that body, it decompose automatically, okay. So वो कंडीशन उसको एक ऑप्टिमम कंडीशन मिल गई वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एंड दैट डिकम्पोज दैट बॉडी। Similarly here, that contains organic fraction cell, okay. The body contains dog body or animal body,
Here also, if you see TDS, it is an inert kind of material. Total dissolved solids, they cannot be degraded. Then heavy metals in the soil, they also not degraded. CO2 in air, this also not degraded. So these kind of substances are called conservative substances. So we can assume rate of generation decay zero, rate of accumulation zero. राइट. अब नॉन कंजर्वेटिव में क्या हो सकता है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन द वाटर बॉडी. जो यूरिन है, बहुत सारा हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल एक्सक्रीटा एक्सक्रीट इन द मॉर्निंग एंड इट गोज टू द सीवर लाइन टू द वेस्ट वाटर. कहीं कहीं क्या होता है, सड़क पे ही पड़ा रहता है तो ऑटोमेटिकली डिग्रेड होता है. सड़क के किनारे देखा होगा आपने, हाउस का जो फूड वेस्ट पड़े रहते हैं या सब्जी मंडी के वेस्ट होते हैं, कुछ दिन बाद अपने आप खत्म हो जाते हैं. तो वो क्या है, वो नॉन कंजर्वेटिव टाइप है, वो डिके हो जाते हैं बायोलॉजिकली. Then we have to assume the system steady state conservative to solve that problem, right? If we assume system steady state and conservative, then that equation, this becomes zero. कंजर्वेटिव रिएक्शन, जब कंजर्वेटिव सब्सटेंस होगा तो रिएक्शन रेट ऑल्सो जीरो बिकॉज इट इज नॉट डिकेइंग. तो वो दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे. दिस बिकम जीरो, दिस बिकम जीरो. सो व्हाट विल बिकम दिस इक्वेशन? इनपुट रेट इज इक्वल टू आउटपुट रेट, like this. Okay, input rate is equal to output rate because under steady state condition sorry, under steady state condition और इक्विलिब्रियम क्या होगा? एक्यूमुलेशन रेट जीरो जाएगा क्योंकि यहाँ एक्यूमुलेशन हो ही रही ना, एक्यूमुलेशन इज जीरो. कंजर्वेटिव हो गया तो हमने मान लिया तो रिएक्शन भी नहीं हो रहा कुछ, तो दोनों टर्म जीरो हो गए. तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट. जो इम्प्यूरिटीज जा रही थी अंदर आ रही थी, एज इट इज बाहर निकल गई, राइट? So pollutant leaves the system at same rate as they entered in the system, right? So this is the easiest way of solving the how the mass of any substance entering to the system, leaving the system, where it is going. Here is one example. If you see, if a free flowing stream or river with flow rate QS means stream, S sub S is for stream, Q indicate the flow rate, and pollutant concentration, say for example CS, concentration C for concentration, S for stream or river, and another stream. Look at this figure here. This figure, I have forgot to add this figure here again. You see here, just a minute. आप ये देखिए, से फॉर एग्जांपल यहां पर हमने सिस्टम को स्टेडी स्टेट और कंजर्वेटिव सिस्टम मान लिया, तो क्या होगा? एक्यूमुलेशन रेट जीरो, रिएक्शन रेट जीरो, राइट? तो QS, the flow of the stream river, okay, it has some pollutant and it has some concentration CS already, okay. Then another stream of waste, this waste stream, and entering into the system with a flow rate of QW is indicating the waste flow rate. Then CW is the concentration of waste in that stream. This entering into this. So what will happen if we say that any kind of substance that is conservative, तो reaction rate zero हो गया, है नहीं? अब यहाँ पे क्या है? एक constant concentration पर enter हो रहा है, steady state मान लिया तो accumulation zero. तो दोनों mix होकर के क्या होगी? concentration कुछ change होगी. CM concentration of mixture and QM concentration of the means mixture or pollutant, and then जो mix stream का flow rate होगा QM, right? तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? जो इनपुट और इज इक्वल टू आउटपुट था, इनपुट क्या हो जाएंगे यहाँ पर? CS QS, ओके, प्लस QW CW QW इज द इनपुट. दोनों इनपुट हो गए, दोनों को समेशन कर देंगे, इज इक्वल टू आउटपुट CM QM, ओके. दिस इज CM QM. सो सिंपल इक्वेशन जो हमारी सबसे ऊपर टॉप में थी, ये वाली इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन ये आ गया फाइनल. CS into QS, concentration times the flow rate plus this is in the stream, then this is concentration of waste stream times the flow rate of the waste stream.
तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ होगा, अब यहाँ पे एक्युमुलेशन भी नहीं हो रहा, रिएक्शन भी नहीं हो रहा, तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा, तो मिक्सचर की कंसंट्रेशन ऑफ फ्लो रेट बढ़ जाएंगे। क्या हुआ? यू कैन सोल्व इट फ्रॉम दिस मॉडल, फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो आई विल गिव यू a small very simple problem so that you will solve it and try to understand what we have discussed, this mass balance or material balance. Okay, this is the problem. Okay, try to solve it. And you can take 5, 6 minutes or maximum 10 minutes. Try to solve it, then ask me. Okay, a simple stream river flowing at a rate of 10 cubic meter per second has a tributary feeding into it with a flow of 5 cubic meter per second. Full stop. The stream concentration of chloride upstream of junction is 20 milligram per liter. Tributary chloride concentration is 40 milligram per liter. Full stop. Treating chloride as a conservative substance, okay, and assume complete mixing of two streams. Find the downstream chloride concentration. Please try to do it. I am waiting your reply. Anyone, please tell me. This is very simple. Did you understand this problem? Anyone, please? Here, Q, this Yes, is sir. the Q stream. Okay, 400. see this. 400 stands. Huh? This is QS, and this is QW. Then upstream, this is CS. This is CW. Okay, I have already given you everything. Now tell the concentration how much. See this. Based on that, take the picture of this slide in your mobile, please, and I will keep this here. Sir, 400. Sir, 400. 400, sir. 400. 400. 400, sir. Paper do. 400, sir. 400. 400, Actually, sir. I have not solved this problem. It is very easy. You can solve this. See, CS into QS plus Yes, yes, sir. CW into QW is equal to CM QM. You have to determine CM. Okay. So CS into QS plus CW into QW divided by QM. You can calculate, very simple. इसको कैलकुलेट Yes, करो, sir. कितनी आ रही है? Sir, 400. 400. Sir, 400. Okay, I hope all of you understand this now. Make sure the units remain same, okay, during calculation. Otherwise, there will be a problem. आप कितना बता रहे हैं? Sir, 400. 400. नहीं, 400. कहाँ से आ गया? 60 होगा. No, sir. Sir, 400. हाँ, एक मिनट भाई. Sir, sir, Q. एक मिनट, आप सही कह रही है, शायद सही कह रही हैं आप. मैंने 20 ले लिया था, वो 20 तो उसका था. 20 10 गुणा 20 और Sir, 20 into 10, 40 हाँ. into 5 Yes. is equivalent to 400. सही है. 400, sir. Sir, 400. 400. 100 plus 200. खैर आप Sir, चेक कर लीजिए. I hope you will understand this. Okay, Okay, sir. right. Okay, sir.
Now quickly come to the next, moving into the advancement of the options of wastewater treatment. This was the best, very basic, you know before means discussing के भाई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, हम आपको बता दें, आप बहुत सारे लोग आई थिंक फ्रॉम द बायोलॉजी बैकग्राउंड, फ्रॉम द science or social science background also. Very few maybe I think from the engineering background. So at least we should understand what is wastewater and how we measure the pollution load or pollutants, how we can analyze, okay, how we determine the fate. These are basic mathematical equations and basic things like sustainable goals. Everyone may be aware, and you are the faculty members like me, ऑल ऑफ अस आर इक्वल लेवल एट इक्वल लेवल. सो इसमें ऐसी बात नहीं है कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं कोई बहुत वो हूँ, आप ही जैसा हूँ मैं भी, मैंने भी इस टाइप के प्रोग्राम किए हैं, कर रहा हूँ, मैं भी अटेंड करता रहता हूँ. ओके, तो क्या है, व्हाट आई हैव रियलाइज ड्यूरिंग दैट कि भाई एक एडवांस एकदम आके बता दें और उसका बेसिक पता नहीं हो तो वो अच्छी मुझे नहीं मतलब समझ में आती. आई डोंट नो यू एग्री विद मी और नॉट. So I have tried to give you in previous slides whatever I have explained. What is actually exactly wastewater? Just we get some understanding. Then what is the current status around the globe in our India also? वो जो slides थी जो मैंने लिंक भेजा है उसमें वहां पे इंडिया का भी है. अब हम देखें हमारे इंडिया में क्या है कि आज की डेट में currently that slide shared in 23, about 20% of water only treated throughout the country. 20% of water from household, or I can say means we can say domestic wastewater, or means industrial wastewater, both. आप देखिए 100% में से 21 ट्रीट हो रहा है अपने कंट्री में. तो वेयर वी आर, कितना एक मतलब आई थिंक वी आर एट अ वेरी गुड लेवल नाउ डेज इफ वी कंपेयर विद अदर कंट्रीज, but still we are lacking in many areas. Okay, and we are not able to control that thing because of various reasons, lack of funds, lack of knowledge. अब इंजीनियर हो जाते हैं, उनको पता नहीं रहती है बेसिक चीजें, हम वहां पे करते रहते हैं उल्टा सीधा. बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड ऑब्जर्व. तो सिस्टम को सही से चलाना नहीं आता, वहां लग गया, वो चल रहा है, खराब पड़ी है मशीन, क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता होता, तो इसलिए वो ऐसे एज इट इज निकल के जा रहा है. तो वो जो मटेरियल बैलेंस वाली स्लाइड थी, दिस वन, दिस कैन हेल्प यू हाउ मच एंटरिंग, you can able to understand how much actually waste we are giving, entering, putting or throwing, disposing into the environment, and how much we are degrading either by mechanical means, chemical means, biological means, or natural way, or how much it is accumulating in a system, or how much it is going out. Okay, so there are different parameters that gives us the confidence, or to gives us the knowledge how a wastewater quality or even water quality can be measured. Most of you are well aware of these parameters, I hope so. Color, very simple parameter. Based on the color, you can see, you can understand. Until unless you are not confident, you cannot drink water. Okay, you can analyze. Say for example, कोई नाली में काला पानी बह रहा, कहीं कहीं कोई लेक है, उसका कलर चेंज हो गया, तो nobody can take that. Okay, ये पहले सुना था हमने बड़े बूढ़ों से कि भाई पहले गांव में तालाब होते थे या नदी चल रही होती तो ऐसे ही लोग पानी पी लेते थे हाथ से, बट आज के डेट में nobody is drinking that water. तो कलर एक very important physical parameter that can give you the idea whether it is pollutant, some pollution is here or not. Then turbidity also, by our sense, by looking, based on the cloudiness, or what can transparency, you can see, you can judge whether this is polluted water or wastewater. Means wastewater definitely it is a polluted. अब उसका कलर कैसा है, so turbidity is not very relevant when we are dealing with wastewater, but in case of water, turbidity is most important. Color is most important in both the cases. Suspended solids is also means most important in both the cases, water as well as in wastewater. Temperature also again very important in both the cases, because if temperature is high, above normal, nobody can drink it. Even the aquatic life, it is uncomfortable with higher or very low temperature. They also require optimum temperature.
For the wastewater treatment, we have to maintain an optimum temperature so that microbial community can sustain there, can optimal way treat the impurities, degrade the impurities from wastewater. So these four parameters are termed as physical because we can sense them physically. We can either through touch, through by looking at the sample, or by sensing. Odor is also one parameter, physical parameter, which I have not added here. So another parameter, pH, DO, BOD, COD. I think some of you may not be familiar with these terms like COD, BOD. COD, BOD are the parameters which gives us an understanding how much organic material is, means present in any wastewater in water. Organic material which is may arise from anthropogenic sources, from the excreta, human excreta, urine और एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग कहते हैं ना, गोबर, भैंस का गोबर, सुबह टॉयलेट में जाते हैं हम लोग, एक्सक्रीटा, excrete. A person, according to the WHO or in the literature, about 60 to 80 gram per person per day excrete daily. A healthy person 60 से 80 ग्राम के आसपास ऑर्गेनिक मटेरियल डिग्रेडेड बाय ए पर्सन पर डे. ओके, सो वो हमें आइडिया देते हैं ये पैरामीटर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल और कॉम्बिनेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल. So BOD is one of the important parameter that gives an idea how much organic material is present in any wastewater. But it is defined or based on the analyzed based on the oxygen utilized, because every water is having oxygen, dissolved oxygen from atmosphere. Okay, DO is the dissolved oxygen. How it is penetrated into the water body based on its partial pressure. Okay, एक सॉल्युबिलिटी होती है. आप देखिए वाटर में, रिवर में अगर डीओ नहीं होगी तो मछलियां या एक्वेटिक लाइफ मर जाएगी. एक डीओ जो है अगर वहां पर 4-5 मिलीग्राम पर लीटर है, देन इट इज ए गुड क्वालिटी वाटर. अगर उससे कम है तो वो फिर जो डिग्रेडेशन में है, सपोज वहां पर 2 हो गई या 1 हो गई, यू कैन अंडरस्टैंड that there is some pollution already of the river. So this is the monitoring parameters. COD is a chemical oxygen demand, means full form of this chemical oxygen demand. We have to analyze the organic material present in that under acidic condition at high temperature. We have to add acids, break down the easily slowly biodegradable organic material, or sometimes called non-biodegradable organic material. So whatever the oxygen equivalent utilized, consumed during that acidification at higher temperature, breaking down of the organic material, it gives us the idea of the COD. Okay, then nitrogenous compounds, mainly ammonia, NH4N, ammonical nitrogen sometimes called. This also mainly entered or found in the domestic wastewater or municipal wastewater because of the human waste is there, urine and excreta is also there. So human contributor are most contributor of the nitrogenous compound in sewage or domestic wastewater, or what can I say, municipal wastewater, or sometimes some pollution also, industrial wastewater entering into that domestic wastewater stream. Phosphorus compound generally measured in terms of the orthophosphate form. These are also excreted by human or by use of the anthropogenic sources like washing of clothes, और आजकल साबुन, क्रीम, बहुत सारी चीजें पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं आजकल, लेबोरेटरी या टॉयलेट और ये सब आती है ना, टॉयलेटरी सब चीजें, तो साबुन वगैरह होता है, सोप होते हैं, वो बहुत ज्यादा वो करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं फॉस्फोरस कंपाउंड्स को, अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आल्सो एंटरिंग इनटू द वाटर बॉडी और इन एनी सीवेज और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर. Then these all parameters are called the chemical parameters. Okay, these are called physical because you can sense them, touch them, see them. These are chemically tested with the reagents, okay, in the laboratory. And these are the biological parameters, or sometimes called microbial parameter, total coliform and fecal coliform. Actually these are the microorganisms that represent the contamination from the fecal origin, right? They are itself not the pathogens like E. coli. If in some water or wastewater E. coli is there, that indicate there is some fecal
पॉल्यूशन इज देयर, मीन्स वहां पर ह्यूमन वेस्ट जरूर है, एनिमल वेस्ट जरूर है उस वाटर में या उस वाटर बॉडी में या वेस्ट वाटर में. तो दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ द पैथोजेंस और coliform, these fecal or excreta pollution indicators, like these two parameters. So these are different parameters. Based on that we can understand the quality of wastewater. Either it is a raw wastewater or it is a treated wastewater. अब ये जाहिर सी बात है, एक सिस्टम में अगर अनट्रीटेड है तो ये पैरामीटर ज्यादा ही होंगे, 100% ही होंगे, क्योंकि अनट्रीटेड है ये. और जब ट्रीटमेंट हो जाएगा तो या तो 50% ट्रीटमेंट हुआ या 60%. अगर 60% ट्रीट होगा तो 40% आउट जाएगा. अगर 95% ट्रीटमेंट होगा तो 5% आउट निकलेगा. अगर हम इस सिस्टम बाउंड्री को देखें कि भाई ये पैरामीटर बीओडी, सीओडी, पीएच, एल्कली जो भी मैंने बताया वो यहाँ थे, अमोनिया और फास्फोरस, इसमें गए, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या केमिकल प्रोसेस में या फिजिकल प्रोसेस से सेपरेशन किया गया, फिर यहाँ जो निकला, सपोज यहाँ 90% एक्यूमुलेट या डिके या जनरेट हो गया, बाहर 10% ही निकला, तो कमी हुई ना. तो हम सिस्टम में जो एनवायरमेंट में फिर वो 10% निकालने, अगर 90% अंदर है सिस्टम के, तो उस सिस्टम को 90% को हम कंट्रोल कर सकते हैं. आइदर वी कैन रिकवर इट एंड उसको किसी भी पर्पस के लिए रीयूज कर सकते हैं फर्दर. उसको आप ड्राई कर लीजिए, आप उसके डिफरेंट अगर हैंडलिंग मीन्स ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं. बट हमारा एम क्या है, जो बाहर जो गया है वो एग्जैक्टली 10% गया. अगर वो हमारा डिस्पोजल स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है देन इट इज ओके. तो ये जो हमारी ये है सिस्टम बाउंड्री और ये वाला जो इक्वेशन है मास बैलेंस, दैट इज वेरी इफेक्टिव, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट अकरिंग एनी सिस्टम. These are the level of treatment. Okay, यहाँ पर different kind of treatment methods you will see here. Methods of treatment where physical forces predominates called unit operations, जहाँ पर रिमूवल होगा केमिकल्स के थ्रू या बायोलॉजिकल रिएक्शंस के थ्रू, वो कहेंगे हम यूनिट प्रोसेसेस. सो मेनली दो तरह के हम ऑपरेशंस कहते हैं, एक तो यूनिट ऑपरेशन और एक यूनिट प्रोसेसेस जो ट्रीटमेंट सिस्टम में है, जबकि कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं दोनों यूनिट ऑपरेशन के और यूनिट प्रोसेसेस के. Right, so you will see here different options of the wastewater treatment. What are the wastewater treatment options? Like aerobic processes, anaerobic processes, then anoxic processes, sometimes combination of these processes, aerobic, anaerobic, anoxic processes. What are the aerobic processes? Let me show you one slide here. Okay, what are the aerobic processes? Aerobic processes mainly the microorganisms. These are mainly the biological process. Actually it is a metabolic process. Metabolism depends on the metabolism carried out by the microorganisms. Okay, so certain microorganisms require oxygen, so these are called aerobic processes. Okay, certain microorganisms that only survive in absence of oxygen, without oxygen, they are called the anaerobic process. So mainly two kinds of biological process are classified. One is aerobic process, another one is anaerobic process, and these are mainly called the biological process of wastewater treatment, or sometimes called secondary processes. Preliminary or primary, advanced primary, these are the physical process, means something that can be separated by physical forces. जैसे कि आपने ये बॉटल है पानी की, आपने इसमें कुछ कलर मिलाया या कुछ शुगर मिलाई या कुछ इनर्ट मटेरियल मिलाया और आपने हिला दिया इसको ऐसे करके, हिलाने के बाद रख दिया थोड़ी देर, तो अंडर ग्रेविटी क्या होगा, वो जो भी इसमें है मटेरियल घुला हुआ था सस्पेंशन, वो सेटल हो जाएगा. तो अंडर ग्रेविटी सेपरेशन हुआ, अंडर ग्रेविटी. तो उनको हम इस टाइप के सेपरेशन को, जहां फिजिकल फोर्सेस, कई बार क्या होता है कि एयर दे करके या कोई मिक्सिंग करके उसको घोला जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, रिमूव किया जाता है. तो जहां पर फिजिकल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हो उनको हम प्राइमरी, प्रिलिमिनरी और एडवांस प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम्स कहते हैं. So they generally are the first part, initial part of the treatment system where solid material has been removed by physical separation, physical forces, and these are called physical unit operations. Then after that, secondary processes. Secondary processes mainly the bio process. As I said, aerobic and anaerobic. उनका combination भी हो सकता है, और वो mainly are used for the removal of the organic impurities, organic material or biodegradable organic material. Certain are the tertiary processes, third approach after the secondary treatment. They are called advanced treatment system.
सब से फॉर एग्जांपल हमें 10 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी चाहिए, उसमें कोई सब्सटेंस है, एक सिस्टम के अंदर गया 100 ग्राम हम एंटर कर रहे हैं, बाहर गया 10 ग्राम, तो अंदर 90 ग्राम रिमूव हो गया, वो डिके हुआ या जनरेट हुआ, उससे अभी हमें कुछ नहीं पता, हमें बाहर को चाहिए, बाहर हमें 10 से कम लाना है, वो नहीं आ रहा है। तो उस सिस्टम में क्या है कि उसकी एबिलिटी यही है, वो 10 से ज्यादा मतलब 90 से ज्यादा रिमूव नहीं कर पाएगा। एक कार है, वो 100 किलोमीटर पर आवर ही चलेगी, वो 150 नहीं चल पाएगी, उसकी एक एबिलिटी है, उसकी इंजन की उतनी ही कैपेसिटी है। ऐसे ही हमारे इन ट्रीटमेंट सिस्टम्स की अपने ओन मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं, दे कैन वर्क अप टू दैट लेवल ओनली। तो सेकेंडरी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं उनका एक लेवल होगा, डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट उतना ही करेंगे जितने उनकी एबिलिटी है, राइट। अगर 90% तक है तो वही होगा, 95 नहीं कर पाएगा, देन you have to add tertiary system for further removal. Okay, sometimes we call that them as a advanced treatment system. उसमें क्या है, केमिकल प्रोसेस ट्रीटमेंट करते हैं या एडवांस मैकेनिज्म और लगाते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ द ट्रीटमेंट सिस्टम्स होते हैं। तो ये मैंने जनरली यहाँ बता दिया। इसमें सस्पेंडेड ग्रोथ, अटैच ग्रोथ प्रोसेस होते हैं एरोबिक में। सस्पेंडेड ग्रोथ दैट कैन रिमेन इन सस्पेंशन, अटैच ग्रोथ means bacteria or microorganisms allowed to grow on the solid material, okay, that are called the attached growth system. तो ये तो हो गया बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री। ये जो है अटैच ग्रोथ और सस्पेंडेड ग्रोथ एनारोबिक प्रोसेस भी हो सकते हैं और एरोबिक भी हो सकते हैं। तो एरोबिक तो समझिए जो बैक्टीरिया बेस्ड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड या बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिक्वायर ऑक्सीजन, वो तो एरोबिक प्रोसेस हो गए। अब वो एरोबिक जो है सस्पेंडेड भी हो सकते हैं या अटैच भी। सस्पेंडेड कैसे रहेंगे, we have to keep them in suspension by artificial means, by mixing, by giving some stirrance, turbulence, उनको सस्पेंशन में रखना, मिक्सिंग कंडीशन, जैसे चम्मच से गिलास में आप शुगर को घुलाएं उसको, या किसी ऐसे मैटर को घुरा के रखें वो सेटल ना हो, तो उसको सस्पेंशन रखना। तो कैसे, बाय आर्टिफिशियल मींस, बाय गिविंग सम मैकेनिकल फोर्सेस, मिक्सिंग। अटैच ग्रोथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वहां पर हमें सॉलिड मटेरियल अंदर प्रोवाइड करना पड़ेगा कि उस पर बायोफिल बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाए। जैसे आपने देखा हो बरसात में कई जगह, एक जनरल लैंग्वेज में बताऊं गांव के, उसमें काई कहते हैं, बहुत सारी एल्गी होती हैं, एल्गी बेस्ड, बायोलॉजिस्ट समझते होंगे, दोज आर फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजी बैकग्राउंड, और इवन केमिस्ट दे आर मे बी वेल फेमिलियर विद दैट एल्गी टाइप। तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिक ग्रो हो जाती है। तो वो क्या, वो उसको एक मीडिया मिल गया, सरफेस मिल गई। तो किसी को क्या है, सरफेस पर अटैच होकर ज्यादा ग्रोथ होती है, किसी को सस्पेंशन में रहकर ग्रोथ होगी। तो क्या होगा, अटैच ग्रोथ, वो काइंड ऑफ बैक्टीरिया दैट ग्रो ऑन सम आर्टिफिशियल सॉलिड मटेरियल, तो वो इस टाइप के प्रोसेस होंगे। एंड दीज ऑल्सो कैन बी द एनारोबिक ऑल्सो। एनोक्सिक प्रोसेस वहां होते हैं जहां ऑक्सीजन जीरो हो, लेकिन नाइट्रेट वगैरह, मीन्स ऑक्सीजन तो रहे लेकिन वो फ्री फॉर्म में ना रहे, किसी के साथ बिल्ड रहे, एलिमेंटल फॉर्म में। ओके, अब मेरी केमिस्ट्री वाले इसको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, क्या कहेंगे, जैसे नाइट्रेट है तो NO3 रहेगी, तो NO3 नाइट्रेट हुआ, तो ऑक्सीजन नाइट्रेट के साथ, मतलब नाइट्रोजन के साथ मिक्स इस फॉर्म में है, ओके, तो वो एनोक्सिक होंगे, लेकिन वहां ऑक्सीजन जीरो रहने चाहिए। सर्टेन बैक्टीरिया लाइक दैट। एनारोबिक प्रोसेस में नाइट्रेट भी जीरो रहने चाहिए और ऑक्सीजन भी जीरो रहनी चाहिए, लेकिन एरोबिक के केस में ऑक्सीजन रहनी चाहिए। ओके, तो ये हमारे क्लासिफिकेशंस हैं। फिर इनके कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। नाउ आई विल शो यू क्विकली पिक्टोरियल व्यू हाउ ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट फॉर एनी वेस्ट वाटर। दिस इज बार स्क्रीन फिजिकल यूनिट, और वी कैन से यूनिट ऑपरेशन प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम। दिस इज ग्रिड चैम्बर, यहाँ पर लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल रिमूव हो जाता है, यहाँ फाइनर पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। फिर ये इसमें रिमूव करके जो बचे बाकी इससे आगे आगे वो एज ए सलज बॉटम में सेटल हो जाते हैं। रिमेनिंग ट्रीटेड एफ्लुएंट जो सुपरनिटेंट है वो सेकेंडरी इसमें चला गया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। जो एरेशन, यहाँ पर एरेशन क्यों करें, क्योंकि एयर सप्लाई हो रही है, एयर, क्योंकि हमें एरोबिक सिस्टम चाहिए, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो वो क्योंकि जब यहाँ मिक्सन में, सस्पेंशन में, तो हम सेग्रीगेट कैसे करेंगे, तो इसको दूसरे टैंक में ले जाएंगे, तो दूसरे टैंक में अंडर ग्रेविटी जो हैवियर पार्टिकल है वो सेटल होकर हो जाएंगे, और क्लियर सुपरनिटेंट वो हम दूसरे टैंक में ले लेंगे और फिर रिवर में डाल देंगे। ये हमारा ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्योंकि अगर हम इसको रिसाइकिल ऐसे करके यहाँ पर नहीं लाएंगे और इसमें नहीं लाएंगे, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी सस्पेंशन में है वो इसमें बह करके बाहर निकल जाएगा। तो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल नॉट रिमेन इन दैट टैंक, therefore we have to recycle a fraction of microorganisms in that way
into that system, right? This system here, this is, and so that is called activated sludge. Okay, why we are calling it activated? Because it is activating the biomass inside this tank by returning back a portion of that biomass into this tank under aerobic condition. That is why it is called activated sludge, and the whole system is called activated sludge process, which is most widely treatment system still around the globe, which is most widely treatment system used for the wastewater treatment, activated sludge process. अब क्योंकि हर जगह आपने देखा होगा एडवांसमेंट हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, रिसर्च हो रही है, फोन हर साल बदलते हैं, आईफोन के भैया 15 आ गया, 16 आ गया, 17 आ गया, हर अपडेट होते हैं, कार हर तरीके की आ रही है कुछ फीचर्स के साथ. सिमिलरली here also, based on the research, these activated sludge process are also under upgradation. तो वो मॉडिफाई होते रहते हैं, उनको अपडेट करते रहते हैं, तो उनके डिफरेंट नाम हो गए. किसी ने कुछ उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया तो उसने अपना पेटेंट करा दिया, तो इनके डिफरेंट वेरिएंट हैं, बट द सेम कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म रिमेन सेम व्हाट इट इज यूज्ड इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस. एंड उसके वेरिएंट्स क्या हैं? सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर, मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्नोलॉजी नाउअडेज in India or around the globe also after activated sludge process. ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस उनका एक एंसेस्टर है और SBR न्यू है, उनका बच्चा है, एक नई चीज में, नए जमाने में वो नई चीज के साथ काम कर रहा है, फुल्ली ऑटोमाइज्ड है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, नॉट फुल्ली ऑटोमाइज्ड, और नए फीचर्स के साथ है टू रिमूव द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ऑल्सो. Activated sludge process only remove the organic material, carbon compounds only. Nitrogen and phosphorus compounds only means barely remove, negligible remove, not barely, बहुत कम अमाउंट में रिमूव होते हैं. तो SBR जो हुआ वो इसी से ही बना, लेकिन किस लिए बना कि उसमें उन्होंने नाइट्रोजन को भी रिमूव करना शुरू कर दिया और फॉस्फोरस को भी रिमूव करना शुरू कर दिया. तो ये प्रोसेस, टिपिकल प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, कैसे वेस्ट वाटर कहाँ कहाँ करा करके किस स्टेज में ट्रीट होता है. यहाँ पर आप देखेंगे वो सेम शीट है जो मैंने ये किया है, ये यूनिट प्रोसेस है यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस है. ये जो डार्क ऐसे सर्किल है वो सब यूनिट ऑपरेशंस है, जहां पर फिजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ सिर्फ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. ओके, तो कॉम्बिनेशन होता है यूनिट प्रोसेस, यूनिट ऑपरेशंस का या एरोबिक एनारोबिक ट्रीटमेंट सिस्टम्स का. एक ये पिक्टोरियल व्यू देखिए, यहाँ लिफ्ट स्टेशन, एक जगह वेस्ट वाटर कलेक्ट कर लिया, उसके बाद में इन्फ्लुएंट गियर मतलब कंट्रोल वे में करके आप आगे प्लांट में रिमूव कर रहे हैं. स्क्रीन्स होती हैं बाहर जाली की तरह, जैसे ग्रिल्स होती है ना, विंडो ग्रिल होती है, इस तरीके से एक बहुत एक जनरल वे में. अब आपको कैसे विजुअलाइज कराऊं, तो आई एम गिविंग लाइक ले पर्सन काइंड ऑफ एग्जांपल. तो विंडो ग्रिल होती है, छोटे छोटे से वो आयरन रॉड्स हो गई, वहां से एक इंक्लाइंड वे में सरफेस एरिया बढ़ जाता है इंक्लिनेशन पे, सर्टेन एंगल पर, और जब पानी इससे बहता है तो जितना हैवी मटेरियल बड़ा वाला होता है वो रुक जाता है, और जो फाइनर पार्टिकल और वाटर इसमें आ जाता है. फाइनर पार्टिकल ग्रिड चैम्बर, ग्रिड जो होते हैं फाइनर पार्टिकल्स, सिल्ट, इनर्ट मटेरियल, एग शेल्स, अंडे खाते हैं सब लोग, छोटे छोटे होते हैं, वो भी बह के फ्लो है. आजकल क्या लोग वो खाते हैं, गुटखा पाउच फाड़ा मुंह में डाल दिया तो वो भी ऐसे डाल देते हैं, वो पानी में आता है, लेकिन वो इससे पास हो जाता है, वो ग्रिड चैम्बर में आकर रुक जाएगा. वैसे तो यहाँ पर ही रुकता है स्क्रीन में ही, अगर पास हुआ तो यहाँ पे, लेकिन वो ऐसे होते हैं फ्लोटिंग, अगर ये वाला मैकेनिज्म फेल हो गया तो वो यहाँ भी आ जाता है, तो उसको पहले ही रोकना जरूरी होता है. तो यहाँ तक का जो है ये है प्रिलिमिनरी सिस्टम. अगर इसमें हमने प्राइमरी क्लैरिफायर लगा दिया तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम हो गया. ओके, ये फिजिकल फोर्सेस, ये प्राइमरी क्लैरिफायर का सेक्शन व्यू है कि वेस्ट वाटर इनलेट से ऐसे गया, फिर यहाँ से होकर के ऐसे गया, ये नीचे स्लज सेटल होते रहते हैं, ये स्क्रैपिंग मैकेनिज्म ऐसे करके चलता रहता है बहुत आरपीएम, स्लो आरपीएम पर, और जो स्लज इकट्ठा होकर के वो यहाँ से निकल जाता है, जो आप यहाँ देखेंगे इसमें ये वाले सिस्टम में. ओके, ये यहाँ पे मैकेनिज्म था स्क्रैपर, ये ग्रिड चैम्बर था, ऐसे सॉलिड्स हो गए, यहाँ के बॉटम में वो स्क्रैपर है, वो ऐसे करके स्लज को कर दे, स्लज डाइजेस्टर में या ड्राइंग बेड में सूख जाता है. सूखने के बाद इसको फिलिंग में जो लो लाइंग लैंड एरिया है वहां पे हम डाल देते हैं. ये वाला सिस्टम प्राइमरी क्लैरिफायर इस तरीके. अब ये इसका सेक्शन के जो मैंने बताया, वेस्ट वाटर ऐसे जा करके यहाँ से फ्लो करके ऐसे करके इसमें जाता है. ओके, ये स्क्रैपर मैकेनिज्म है, यहाँ पर स्लज ऐसे करके वो आ गया एनोबिक. ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस यानी कि प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट, डिसइंफेक्शन, सॉलिड ट्रीटमेंट. तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यहाँ तक हमारा वो प्राइमरी प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट था जो फिजिकल सेपरेशन था, ये वाला सब सिस्टम. अब इसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट है जो मेनली बायोलॉजिकल प्रोसेस है.
तो बायोलॉजिकल प्रोसेस देन प्लस सेडिमेंटेशन, क्योंकि वो सस्पेंशन में भी रहता। ये सीट दिखाना चाह रहा था उस वक्त मैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस, एरोबिक, एनारोबिक और इंटीग्रेटेड सिस्टम। एरोबिक यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट नीड ऑक्सीजन, एनारोबिक biological process that do not require oxygen, integrated system, anaerobic, aerobic combinations. Then aerobic process, activated sludge process and its variant, as already I have discussed. Activated sludge के बारे में I have told you, informed you. Then sequential batch reactor, the updated form of activated sludge process, जिसको मैं बता चुका हूँ आपको। ये sequential batch reactor like a means new updated version of the conventional or old activated sludge process, we can say that. Okay, there is another system, aerobic granulation biomass system or aerobic granulation. This is under research still, इसमें research चल रही है, but at somewhere aerobic granules are बन गए। The granules are the compact, like जैसे again I will give you a cricket ball, spherical ball, or we can say those who are going some taking medicine from homeopathy, small globules होते हैं ना, छोटी छोटी balls होते हैं white color की, it इस kind का, और naked eye we can say through that, और same diameter, उतने ही diameter का 2-3 mm diameter का compact granules, aerobic granules बन जाते हैं, बैक्टीरिया के फॉर्म होते हैं। वो बैक्टीरिया आपस में स्टिकी नेचर हो जाते हैं। एक्टिवेटेड स्लज में क्या होता है, वो जो है वो क्या होता है, स्टिकी नहीं रहता, मतलब ग्लोब्यूल की फॉर्म में नहीं था, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या है, एरिया ज्यादा चाहिए एक्टिवेटेड स्लज के लिए। यहाँ पे बॉल की तरह होगा, स्मॉलर बॉल्स होते हैं, तो वहां पर क्या है, एरिया कम हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज कंपेयर टू द activated sludge process. Okay, so this is again another updation or update or modification of the activated sludge process, like SBR, sequencing batch reactor, right? Here it is the chemistry of aerobic granule. You can see जब वो spherical ball बन जाती है तो outer layer, inner layer, इसमें बहुत सारे कोर होती हैं, ये बैक्टीरिया दिख रहे हैं आपको, microorganisms. Okay, these are the oxygen gradient in the granule. You can see how much the reactions are occurring. Okay, आउटर लेयर जो होती है उस पर क्या, अमोनियम ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन को, जो नाइट्रेट है उसको ऑक्सीडाइज करके NOx फॉर्म में बना दे, नाइट्रेट फॉर्म में, जो लेस हार्मफुल होगी, अमोनिया हाई हार्मफुल है। सीओडी बाहर के आउटर लेयर पर, ये जो है सीओडी, ये गलत चला गया हमारा इसका साइन, प्लीज चेक this arrow also here, this one, this reaction is not in the inner zone, it is in the outer zone, because oxygen penetrate in the outer zone only. Okay, so biological oxidation and COD plus O2. COD represent the organic material. When it react with oxygen, with microorganisms in presence of एक मिनट, जस्ट मिनट, आप बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाइए, मैं बताता हूँ। Okay, what I was saying, the organic material which we measured in the form of through COD, chemical oxygen demand, that organic material react with the consumed or decomposed by microorganisms in presence of oxygen, converted into the carbon dioxide and friction of water, right? So this is the outer zone is the aerobic zone, inner zone is the anaerobic zone, because oxygen do not penetrate inside this. So यहाँ पर anaerobic kind of microorganisms रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, I will share this sheet with you. You can see here are some, again, some other treatment options for the anaerobic processes, especially where the anaerobic process where oxygen is not utilized. But as I said in the beginning, few slides in few slides, that everyone has certain abilities, और मैं क्या कहूँ, किसी के एक इनहेरिटेंस करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे मैंने बताया, एक कार कैन रीच ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, बट बाइक कैन नॉट रीच 100 किलोमीटर पर आवर, 80 मे बी 70 लाइक दैट। तो सिमिलरली एनारोबिक प्रोसेस की एक ट्रीटमेंट एफिशिएंसी होती है कि वो 70-80% से ज्यादा रिमूव नहीं करते ऑर्गेनिक मटेरियल, नाइट्रोजन फास्फोरस को रिमूव बिल्कुल नहीं करते हैं। तो उनका इंक्रीज कैसे करना है नहीं, उसको हाउ टू रिमूव फर्दर। तो सेम टेक्नोलॉजी, सेम काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी एडेड इन सीरीज, राइट? सो
बिकॉज वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो पहले यूज कर लिए, अब उनके बाद में सेम काइंड जो होगा उसमें हार्डली मटेरियल वो ऐसा होगा जो उन्होंने खाया नहीं, रिजेक्टेड था, तो वो दोबारा से कैसे खा लेंगे? तो वी हैव टू ऐड अनदर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, aerobic microorganisms. So we call them aerobic processes. So we have to integrate anaerobic or with aerobic process. हमने कहा था ना aerobic भी होते हैं, anaerobic भी, और integrated combination of these two processes. So these are the widely accepted treatment systems nowadays, anaerobic plus aerobic. तो anaerobic में USB is the one of the most important treatment process, and उसके बाद में there are so many aerobic processes which can be integrated to increase the treatment efficiency and to reach or to get the required level of the disposal standards जो हमें चाहिए, disposal standard, treatment efficiency वो हमें मिल जाए। तो उसके लिए क्या polishing pond है, aerated lagoon है, activated sludge process है। These are certain treatment technologies, although separately they are working in field at full scale level, but with combination these are not fully, under developing stage still, or you can say under laboratory studies as well as in the field, but at small level, not in the, means at full level. These are not under, means use for the full treatment at full scale level. MBBR, another treatment process. MBBR is the moving bed biofilm reactor, है ना? जैसे उसमें हमने अभी शुरू में देखा था कि अटैच ग्रोथ सिस्टम, आई वाज टॉकिंग अबाउट सम बैक्टीरिया like to grow fast on the solid surface, some material attached medium, they are not, not means fast in their growth is not fast in suspension, and treatment efficiency is also not good in the suspension when they are in suspension. But once we allow them to grow on any solid material, their multiplication is high, short time growth rate is very high, and treatment efficiency is also good. So we call that moving bed biofilm reactor. There are certain kind of plastic media like this, you can see here, we provide in this. So इसके अंदर बाहर, जैसे ये बॉटल हो गई, सपोज किया ये प्लास्टिक सरफेस डाल दी मैंने खाली बॉटल, तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर की सरफेस पर भी ग्रो करेंगे, बाहर भी। एक तो सरफेस एरिया बढ़ गया, है नहीं? जब इसी का सरफेस एरिया बढ़ गया तो लेस एरिया इसका हो गया, फुटप्रिंट एरिया, जो हमारा कंटेनर है उसका एरिया कॉम्पैक्ट हो गया, क्योंकि वो बायोमास जितना हम वैसे सस्पेंशन में चाह रहे थे वो इसके अंदर 2-3 जगह पे अंदर ग्रो हो गया, इसके लिए एरिया ज्यादा मिल गया। दूसरा क्या है, नाइट्रिफिकेशन, जो हमारा अमोनिया वहां पर बहुत ज्यादा रिमूव नहीं हो रहा था, यहाँ पर कंप्लीट नाइट्रिफिकेशन। स्लज प्रोडक्शन is again, very less. So these are certain advantages of using NBBR system. Okay, moving bed biofilm reactor. So these are certain, processes which are, most widely used in the field for the treatment of wastewater, especially domestic wastewater. For industrial wastewater treatment, what I can say, these are industry specific. Okay, we cannot use each and every biological process directly for the industrial wastewater treatment. We have to treat them first physically, chemically, then we have to see the characteristics, whether the parameters or constituents present in that wastewater is feasible for the bacteria, for the biological reactor or not. So based on that, only then we will add the biological combination for the treatment of industrial wastewater. But for domestic wastewater, directly we can give the whatever we discussed here, the flow diagrams of process that are means directly can be used for the treatment of domestic wastewater. Here you can see there are 4 different combinations here, flow diagram of different kind of treatment processes. This is aeration tank, this is the activated sludge process, this is the pond, aerated lagoon means pond, artificial air is injected so that required level of oxygen can be maintained for the proper growth of microorganisms inside the pond. Then this is the trickling filter like MBBR, like this, moving bed biofilm reactor. Another kind of the treatment process is trickling filter, where wastewater is allowed to flow over the surface of the solid material. Okay, here moving bed है,
यहाँ पर क्या है, ये मीडिया जो है ये मूव करता है, फ्लूडाइज करता है जैसे 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 घूमता है टैंक के अंदर। लेकिन यहाँ पर ट्रिकलिंग फिल्टर में दिस बिकम फिक्स्ड, इट रिमेन्स फिक्स्ड, कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है। जैसे ये रह गया टैंक, इसके अंदर पूरा भर दिया, और इसके ऊपर से जैसे आप बाथरूम में शावर ले रहे हैं, somebody is taking shower and water is flowing drop over the surface of our body, so it is ऐसे करके पानी फ्लोट होता है। तो जो वेस्ट वाटर में जो इम्प्यूरिटीज है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉलिड सरफेस पर ग्रो रहे, दे कैन इजीली कंज्यूम और डिग्रेड द ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, एंड एयर से जो है एयर डिफ्यूजन से वो एरोबिक कंडीशन वहां मेंटेन हो रही है। So that kind of treatment system is called trickling filter. This is again aerobic process. Another one is the RBC process, rotating biological contactors. Rotating biological contactors like this is a shaft. अब इस shaft को मैं पहिए लगा दूं, जैसे कि साइकिल के पहिए है, यानी डिस्क देखिए आपने कोई ऐसी डिस्क हो, तो उसका दोनों साइड में डिस्क होगी, एक शाफ्ट पे 10-20 डिस्क लगा दी और ऐसे स्लोली वो रोटेट करती है। हाफ डिस्क रिमेन्स इन वाटर, हाफ डिस्क एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, एयर में। ओके, तो वो क्या है, एयर से जैसे ही एयर के पार्ट में जाएगी, कॉम्बिनेशन में आएगी एयर के टच में एटमॉस्फेयर के में, दे विल टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और जब वो पानी में जाएगी, वेस्ट वाटर में डिप होगी, वही वाला पार्ट रोटेट होके हाफ पार्ट पानी में जाएगा, तो वेस्ट वाटर से इम्प्यूरिटी पिकअप करेगा। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट है, बट basic mechanism remains same what I have told you in the beginning for the activated sludge process. These are the different options of the wastewater treatment, aerobic and anaerobic. Aerobic में कई सारे हो गए, modification हो गए। anaerobic में most widely एक ही treatment process है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, UASB, upflow anaerobic sludge blanket reactor। ओके, और ये बाकी जो है आपको मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाए हैं, इसमें डिफरेंट वो है, और आप देख सकते हैं ये फिक्स्ड फिल्म बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए है, आरबीसी का है, कैसे करके पानी यहाँ से आया वेस्ट वाटर, इसमें प्राइमरी क्लैरिफायर में गया, फिर ये आरबीसीज में गया, सेकेंडरी क्लैरिफायर। व्हाई वी एड सेकेंडरी क्लैरिफायर? बिकॉज दे रिमेन इन सस्पेंशन, माइक्रोब्स। भाई ये तो सस्पेंशन में रहेगा ना, तो फिर वो पानी के साथ बाहर निकल जाएगा, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस बायोमास को यहाँ पर हमें सेटल कराना अंडर ग्रेविटी। सुपर नीटेंट आगे निकल गया, वो सेटलिंग के बाद में रिसाइकिल होकर के इधर आ गया। ओके, तो ये इस टाइप के प्रोसेस है। ये एनारोबिक का है, अपफ्लो स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर एंड एनारोबिक फिल्टर, दीज आर द टू, बट मोस्ट वाइडली यूज दिस वन, अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर। तो उसके साथ में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, क्योंकि एनारोबिक का जो है वो नहीं हो पा रही है एफिशिएंसी की, जैसे मैंने बात की 70% मैक्सिमम अवेलेबल है इन द फील्ड, रिमेनिंग 30% बहुत ज्यादा है जो इम्प्यूरिटीज बाहर जाएगी। तो उस 30% को हाउ टू रिड्यूस, तो उसके साथ हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लगा सकते हैं, और ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिसमें यहाँ पर बता दिया, वेरी एक्सपेंसिव, दे रिक्वायर एयर, जब एरेशन रिक्वायर होगा तो अल्टीमेटली कॉस्ट आएगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वेरी एक्सपेंसिव। ओके, तो अदर ऑप्शंस क्या हैं? एरोबिक ग्रेन्यूल्स है जो अंदर स्टडी है, वो अंडर स्टडी हमने दिखाया था पहले, एरोबिक ग्रेनुलर बायोमास मैंने कहा कि अंडर डेवलपिंग स्टेज है। तो वेरियस कॉम्बिनेशंस फॉर एनारोबिक ट्रीटमेंट सिस्टम आर गिवन हियर। These are certain real pictures of the wastewater treatment plant. This is the pond and used after USB for post treatment. Here BOD greater than 30, TSS suspended solids greater than 50, which are following the CPCB standard for the agriculture purpose, right? Reuse for agriculture. Then downflow hanging reactor, another one. Here you are getting treated effluent BOD, final BOD 10 to 20 milligram per liter. Coliform is still very high. So क्योंकि सीवेज है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, तो कॉलीफॉर्म तो रहेंगे ही, पैथोजेनिक बैक्टीरिया तो रहेंगे पैथोजेन, तो इसलिए वहां पर वो भी देखा, तो इसमें इसका भी ट्रीटमेंट है, लेकिन वो पैथोजेनिक रिमूवल ज्यादा नहीं है। दिस इज एरेटेड लैगून, देखिए पॉन्ड है, यहाँ पे एक एरेशन इम्पेलर बड़ा सा फैन की तरह चलता है, ये पानी को स्प्लैश टर्बुलेंट देता है, इसके टर्बुलेंस से ऑक्सीजन पेनिट्रेट होती है। तो इसके बाद में जो ट्रीटमेंट जो एफ्लुएंट है, इसीलिए आई टोल्ड यू सम टर्मिनोलॉजी इन द बिगनिंग, इन्फ्लुएंट, एफ्लुएंट, पॉल्यूशन लोड, पॉल्यूटेंट, पॉइंट लोड, नॉन पॉइंट पॉल्यूशन, पॉइंट क्या कहा था मैंने, क्या बताया था मैंने, एनीवे। सो एफ्लुएंट, कॉलीफॉर्म, effluent, suspended solid, these are the concentrations of the treated effluent, right? In terms of BOD, suspended solids, no nitrogen and phosphorus removal, large area requirement.
एरेटेड लगून के साथ ये प्रॉब्लम है। ओके, यू कैन सी द ट्रीटमेंट क्वालिटी। ये तो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर की है, ये एनारोबिक के ट्रीटमेंट के बाद की है, और ये एरोबिक के ट्रीटमेंट के बाद की है। तो देखिए आप कितना फर्क है। तो ये अपडेटेड फॉर्म ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है। इन दोनों में फर्क क्या है, इसकी ट्रीटेड क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन बहुत कॉस्टली है, हाईली कॉस्टली। जैसे कहते हैं ना, एक रिच आदमी कोई BMW ऑडी मेंटेन कर रहा, कोई अपना मारुति 800 मेंटेन कर रहा, तो वो वाला हिसाब है, समझ गए नहीं। तो थोड़ा सा इसमें जैसे कि USB है, ये वाली एनारोबिक ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, ये जो है खाली बगैर पोस्ट ट्रीटमेंट के, बगैर इंटीग्रेशन के, बगैर कॉम्बिनेशन विद एरोबिक, ये वो वाले स्टैंडर्ड नहीं ला सकता जो ये सिंगल स्टेज में ला रहे हैं, लेकिन इसका एक्सपेंस बहुत है। हाईली ऑटोमाइज्ड सिस्टम इज रिक्वायर्ड। So with that, I would like to end the lecture here. If you have any query, please ask me. Although I left a few slides because we have finished the time. I want to discuss about the use of the treated effluent, but there is not as much use except agriculture or for non-potable use, right? जो ट्रीटेड एफ्लुएंट है वेस्ट वाटर का, वो अभी जो है कहीं पर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सेप्ट सम वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, ओके, अदरवाइज हर जगह पर नॉन पोर्टेबल यूज के लिए ट्रीटेड एफ्लुएंट गवर्नमेंट इन्फोर्स कर रही है, लॉज ला रही है, या जीरो डिस्चार्ज कर रही है कि भाई आप अपने कैंपस के अंदर यूज करिए, उसको रिवर में डिस्चार्ज नहीं करना है, लैंड पर डिस्चार्ज नहीं करना है, या अगर करना है तो ट्रीटमेंट उतना लेवल का दीजिए जैसे वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो जाए। ओके, एक होता है रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन, एक होता है नॉन रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन। रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन होता है जैसे सब्जियां होती हैं, बहुत सारे फ्रूट होते हैं जो जमीन पर जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए वाटर के, है नहीं, फल हैं बहुत सारे जो जमीन पर होते हैं, और मूली है, मिर्च है, या जो भी जमीन जो डायरेक्ट टच में आके, जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां, पालक, पत्तियां खाते हैं, ये जो है रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन होगी। इसके लिए ट्रीटेड एफ्लुएंट यूज करना बिल्कुल मना है। जैसे मैंगो है जो ऊपर पेड़ पर लगता है, ओके, या उसका छिलके के अंदर होता है, बनाना होता है, that are the non-restricted irrigation. In that case, this kind of treated effluent can be used, but that should follow all the parameters. जो उसके नॉर्म्स बनाए गए वो पैरामीटर फॉलो होने चाहिए तभी यूज होगा। Otherwise, for non-potable use, not for drinking purpose, yet made any rule in India or anywhere in the world, except few part I have heard in the Singapore. A very small fraction, they mix with other huge water amount, then they use that treated effluent for the reuse purpose. I hope all of you understand the slides. I tried to compile these slides in a way that everyone can easily understand. Otherwise, there is a lot of things to discuss, to talk. Okay. If you have any question, please you can ask me. Sir, good afternoon. This is Milan Mondal from West Bengal. Am I audible, sir? Yes, audible. Mandal Sahab, how are you? Yeah, sir, I am fine. Hope you are well, sir. And your lecture was really insightful one and erudite one. And sir, my question is, you were talking about the wastewater management, and if we go for this kind of management, actually the refining of wastewater, so will the cost be not much more than that of buying the fresh water, isn't it, actually? So No. how can that be done? You are right. Cost will definitely affect, but it depends. As I said, first you have to see for what purpose you want to use that treated wastewater, right? As I said, SBR. In the last slide, I show you picture of the treated wastewater or untreated wastewater, and you see the color transparency on that. And I told you, sequencing batch reactor is quite costly, okay, compared to the anaerobic treatment process. But we are not able to get that kind of clarity in the water. Treatment efficiency little bit less. Okay, so for that waste management, say for example, you said if you want to get fresh water, if there is no availability of fresh water, what is that an alternative? And if you recall the first 2-3 slides, a very part of the world, almost I forget that figure.
in some part of the world by 2050, most of the world population, lacks huge water, fresh water for daily use. So in any way, anyhow, we have to come to that. We have to make that norms so that we can use the treated wastewater, because you see in the slides, if I show you first 2 3 slides, the potential of that. Let me show you. How much I show you that? You see? It is visible? Sir. Slides are No, sir. No, No, sir, no. sir. Not visible. not visible? Not visible, sir. Not Just- visible. Okay, just a minute, just a minute. Just a minute. I hope it is visible now. No, sir. No? No, sir. Okay. Entire screen. Yes? No. No, sir. No? Now it is No, visible. sir. No, sir.